Okay, so I think I think everything is clear. No more questions. Okay, no more questions. So let us start with Plato. Okay, हमने last time administrative thinkers कर लिया. एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स कर लिया था. आज हम प्लेटो एंड एरिस्टोटल बहुत आराम से समझेंगे. We are going to understand them in a very lucid manner, in a very relaxed manner, that so that it gets absorbed. Okay, it gets absorbed. Okay, so Western political thought, उसमें सबसे बड़ा नाम आता है प्लेटो का. जब से 2013 से 2013, okay, when the pattern changed till now, okay, till now we didn't have a single question, okay, directly on Western political thought, or okay, we had questions related to Indian political thought. All right, Indian, we had questions related to Indian political thought. Okay, we had questions related to Savitribai Phule, and we had questions related to Mahatma Gandhi. But you know, Western political thought, it's a dormant topic. All right, it is a dormant topic. UPSC is yet to ask. You can go and check for yourself. Now coming to, you know, Plato, he is dubbed as the most penetrating, most wide-ranging and influential author in the history of philosophy. Okay, you can use this as an introduction. Ultimately, our goal is to write big, good answers, right? So, you know, you can prepare in your notes itself what content are you going to use for your introduction, what content you might use for your conclusion. Okay, so he is dubbed as the most penetrating, okay, influential author in the history of philosophy. Plato's wide-ranging ideas in the field of ethics, metaphysics, philosophy, and politics are written in his book called The Republic. एक book है Republic. If you want to read, it is, I think, very cheaply available. I think for only 60-70 rupees, you can read it on Amazon. Okay, a very complex book. I would suggest, okay, unless and until you have a large amount of time. So, okay, so he has written a book called Republic. वहां पर उसने डिस्कस किया था ethics, metaphysics, philosophy and politics के बारे में. Now, according to Plato, okay, according to Plato, in contemporary world, those who behave unjustly, कंटेम्पररी वर्ल्ड में जो लोग अनजस्टली बिहेव करते हैं, दे नेचुरली गेन पावर. Okay, people who behave unjustly, it is easier for them to gain power and become rulers and gain strength in society. Do you understand what this means? Are you able to, you know, grasp what this means? That people who behave unjustly, iska matlab people who do not play by the rules. ठीक है, if I you know, if I go an informal route, I can say people who are bad boys. Can I say bad boys? People who do not play by the rules, and you know, in popular culture, what they are called? They are called bad boys, right? So these bad boys, it is easier for them to gain power because they bend the rules, all right, and they gain strength in society. Indian society, Indian society or Indian politics is the best damn example that you can find. Okay, where rule breakers, okay, people who break the rules, they are awarded with Rajya Sabha, Lok Sabha,
constitutional positions, ministerial birth. We have seen, yes or no? Today, if you will go and you will search ADR data, okay, Association of Democratic Reforms data, you will come to know what, that majority of our politician, they are carrying a criminal record. Some might be having some criminal record of hate speech, some might be having criminal record of murder, people, they are accused of rape. Yes, but still, they are at the pinnacle of their power. In the Indian political structure, they are having ultimate power. So that's what Plato, thousands and thousands of years before, sitting on a mound in Greece, in ancient Greece, he had predicted that people who will behave unjustly, they will naturally gain power and become rulers and gain strength in society. Yes. Okay. Now Plato further states that it is not in favor of weak people to behave in accordance with justice, as they remain underprivileged, okay, while doing so. यहाँ पर एक और बात कर रहा है, पहले इसने प्लेटो हैड addressed, okay, Plato had addressed who? People who wanted to gain power. Earlier, Plato addressed people who wanted to gain power, and he said, okay, you want to gain power, okay, very good. But if you wish to gain power, you have to behave unjustly. You have to bend the rules. All right. Isn't it the middle class? Middle class? Yes, Aam Aadmi. Now, just think about this for a moment. Think about this for a moment. Plato, thousands of years before, he is stating that it is not in the favor of weak people to behave in accordance with justice, okay, as they remain underprivileged while doing so. Okay, आपकी लड़ाई हो गई, I'll give you an example. आपकी लड़ाई हो गई, आपको किसी ने थप्पड़ मार दिया, आपने उसको थप्पड़ वापस नहीं मारा, thinking कि यार, it is against the law. Okay, it is against the law. ठीक है, उसने आपको थप्पड़ मार दिया, आप गए पुलिस स्टेशन. Okay, police station, you went to the police station saying that this person slapped me. Now the police started laughing. Okay, they said, why don't you slap him back? And you are stunned because you thought, okay, you behaved in accordance with justice. Okay. Okay, sorry. You behave in accordance with justice. You did not slap the person back. Okay. This person slapped you and you went to the police station rather than, beating him black and blue. And you behaved in accordance with justice. And the policeman, he started laughing. Okay. The policeman started laughing that why didn't you slap him back? And then you persisted, nahi, inspector साहब आप मेरी complaint लिखें. The inspector will, close you behind doors and he will beat you himself. Now you are a weak person. Okay. भाई इसको literally मत लेना. Literally मत लेना. This is what Plato said. Okay, यहाँ पर black pilling session नहीं चल रहा है कि आप लोग इंडिया छोड़ के भाग जाओ. ठीक है. This is not a Twitter black pilling session. This is what Plato said. और ये Plato का लिखा हुआ चीज है. Okay, this is not my views. All right. ये चीज आपको ध्यान रखना है that he has said.
Okay, he has said that if you will behave in accordance with justice, you will remain underprivileged while doing so. अब देखो बात क्या है, बहुत ध्यान से सुनो। क्लास करने आप आए हो, समय बहुत कीमती है आपका। ओके, कीमती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छी अच्छी बातें सुन रहे कि प्लेटो ने क्या कहा था। यहाँ पर हमारा मेन एम, इट शुड बी हाउ आई कैन यूज दिस कंटेंट इफ इट इज गिवन हेयर। यहाँ पर ब्लैक पिलिंग नहीं करना है। वो हाउ यू कैन गिव, आई टेल यू। 10 मार्कर क्वेश्चन है। क्या आता है? शुड पीपल प्ले बाय एथिक्स एंड रूल्स। अगर क्वेश्चन आता है should people, okay, should the common folks, okay, play by the rules, तो वहां पर आप क्या करोगे? प्रोज एंड कॉन्स स्टेट करोगे। बिकॉज if you are writing in the UPSC paper, UPSC civil services paper, as a bureaucrat, you are expected to present both sides of the story, why you should play by the rules and why you should not play by the rules, rather than writing in a normie manner। नॉर्मी की तरह लिखोगे, नहीं नहीं हमें तो इंस्पेक्टर साहब पीट देंगे, ऐसे नहीं लिखोगे। वहां पर आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू प्लेटो। वंस यू विल इंक्लूड प्लेटो, you will start sounding intellectual, you are understanding why this notes are important। ओके, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ गया, शुड पीपल फॉलो एथिक्स, ओके, शुड पीपल फॉलो एन एथिकल कंडक्ट, डिस्कस, 10 मार्क्स। ओके, सो देयर डोंट राइट अकॉर्डिंग टू मुजी पेपे, ओके, और डोंट राइट अकॉर्डिंग टू रंजन दुबे। ओके, ये सब ऐसे नहीं लिखते वहां पर। या डोंट राइट वट एवर योर नेम इज, ठीक है, डू नॉट राइट वट एवर योर नेम इज। वहां पर लिखो अकॉर्डिंग टू प्लेटो, अकॉर्डिंग टू सोक्रेटिस, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, अकॉर्डिंग टू हॉब्स। ऐसे लिखोगे तो दिस विल लेंड क्रेडिबिलिटी। ओके, इट्स ऑल अबाउट क्रेडिबिलिटी। Examiner is not interested in hearing your side of things. Examiner is more interested कि कितना नेम ड्रॉपिंग कर सकते हो, कितना थ्योरीज आप लिख सकते हो। ओके, ठीक है, वो अलग बात है कि डू डोंट हैव टू गो टू डीप। हर जगह पे घुसाने की जरूरत नहीं है इसको, भाई मतलब आपके व्यूज पूछे हैं तो प्लेटो के व्यूज घुसा रहे हो। बट स्टिल मेजोरिटी ऑफ द केसेस में, ऑल राइट, मेजोरिटी ऑफ द केसेस में ऐसा ही होगा। तो इस टाइप का जो कंटेंट है, जस्ट सिट डाउन एंड ब्रेनस्टॉर्म। ओके, थोड़ा सा आगे जाना है ना, इंडिया का टफेस्ट एग्जामिनेशन, सो कॉल्ड टफेस्ट एग्जामिनेशन क्रैक करना है, यू हैव टू गो द एक्स्ट्रा डिस्टेंस। तो आपको हर पॉइंट को, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसको असाइन करना होगा। यू हैव टू असाइन इट कि अच्छा यहाँ पर आई कैन यूज दिस, इस टाइप के क्वेश्चन में आई कैन यूज दिस। ओके, सिर्फ नोट्स हो जाने से, ओके, सिर्फ नोट्स हो जाने से और समझ जाने से काम अब नहीं बनेगा, बिकॉज द कंपटीशन हैज गॉन क्रेजी बैड। ओके, तो ये समझ आ गया आपको? ओके, दो चीज हमने डिस्कस की। प्लेटो ने एड्रेस किसको किया है? वीक पीपल को, आपके हमारे जैसे वीक पीपल हु फॉलो द लॉ। ओके, एंड ही हैज एड्रेस्ड पीपल हु वांट टू गेन पावर। उनके लिए क्या बोला है? ही सेड डू नॉट बी जस्ट, ओके, be unjust and you will naturally gain power, bend the rules, be a bad boy। Basically he is saying be a bad boy। All right, now Plato argues that justice is a methodical system। Okay, Plato argues that justice, तो यहाँ justice बार बार क्या आ रहा है? Because he gave a theory of justice। प्लेटो का theory of justice होता है, okay? उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। Now Plato argues that justice is a methodical system and it functions according to the needs of the society and individual। समझ आ रहा है? It is not fixed। According to Plato, justice is not fixed। It can be modified according to the needs of the society and individual। Can I give you an example? Can I give you an example and be open minded? अफगानिस्तान में, during the Taliban times, there was a lady. I don't know if you had heard about her. During not this Taliban, okay, Taliban 1.0, in the initial days from 1996,
till 2001, whenever Hamid Karzai took over. Okay, in Afghanistan, when the first Taliban was there under, Mullah Omar wala. Okay, Mullah Omar, not the Bengali girl. I'm not talking about her. There was a lady जिसको अक्यूज किया गया था, जिसको अक्यूज किया गया था ऑफ ऑफ डिसरिस्पेक्टिंग द कुरान. उसको एक मौलाना ने बोला था कि दिस लेडी हैज डिसरिस्पेक्टेड द कुरान. तो उसको क्या किया गया था? शी वाज स्टोन टू डेथ. स्टोन टू डेथ समझते हो? उसको पत्थर मार मार के जिंदा मार दिया गया था. ठीक है, पत्थर से मार मार के, एंड शी वाज स्टोन टू डेथ. ऑल राइट, तो वो जस्टिस था, किसी पे कुछ नहीं हुआ. नाउ व्हेन तालिबान फेल, ओके, उस समय क्या हुआ कि दैट पीपल सेड कि हाँ, मतलब ये इस लेडी ने कुरान को डिसरिस्पेक्ट किया है, वी विल थ्रो द स्टोन्स. ओके, और उसके बाद में पता चला कि ओके, शी वाज नॉट, शी एक्चुअली डिड नॉट डिसरिस्पेक्ट द कुरान. उसको फंसाया गया था. ओके, उसको किसी कॉन्स्पिरेसी के थ्रू फंसाया गया था. शी डिड नॉट डिसरिस्पेक्ट द कुरान, but she was stoned to death. Now, when Hamid Karzai came, people who had stoned, all right, people who had stoned these ladies, they were put on trial, okay, and they were put behind bars. लेकिन तालिबान में ऐसा नहीं हुआ. तालिबान के टाइम में जस्टिस वो बोला गया कि भाई इस औरत ने कुरान का डिसरिस्पेक्ट किया है. This lady has disrespected the Quran, and it is good that she was stoned to death. But when the Taliban fell, the people who had stoned this lady to death, okay, they were put behind bars. तो वहां पर आप चीज देखोगे कि सोसाइटी थी, एक तालिबान की सोसाइटी थी और एक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान की सोसाइटी थी. दो सोसाइटी थी, एक थी तालिबान की सोसाइटी और एक थी रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान की सोसाइटी. वहां पर स्टोनिंग टू डेथ, दैट वाज कंसिडर्ड ओके. स्टोनिंग टू डेथ वाज कंसिडर्ड ओके, whereas in रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान स्टोनिंग टू डेथ वाज पनिश्ड. ओके, तो वो क्या आपको समझ आ रहा है? जस्टिस हुआ, जस्टिस दोनों तरफ से हुआ. जस्टिस हुआ कि इस लेडी ने अलेजेडली कुरान का डिसरिस्पेक्ट किया है, allegedly, okay, but she did not disrespect the Quran. Okay, it was तो but वहां justice मिला, and it was meted out according to the needs of the society, the Talibani society. Okay, the Talibani society. यहां पर रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान में भी जस्टिस हुआ, बट इट वाज डन अकॉर्डिंग टू द progressive, forward looking society which Republic of Afghanistan meant to build. इसका एक और एग्जांपल देता हूं आपको. सऊदी अरेबिया में क्या हो रहा है? सऊदी अरेबिया में मोहम्मद बिन सलमान, okay, earlier what used to happen, if you were a woman and if you were caught driving, you were heavily penalized. You were given a challan, you were given a ticket that you are a woman and you cannot drive. Okay, there was this concept of mehram, correct me if I'm wrong, mehram, that a male guardian, okay, a male guardian has to uh, take you, if you want to go somewhere, you have to be in the presence of a male guardian. अगर आप बाहर जा रहे हो तो कोई मेल रिलेटिव के साथ. तो मोहम्मद बिन सलमान, what he did, he cancelled this thing. Okay, now he said that you cannot, okay, that you cannot you did not need to be accompanied. As a woman you are free to drive. As a woman you do not need to put the hijab. Okay, if you, it's your wish, if you want to put the hijab, it's your wish. If you do not, you do not need to. वहां पर भी justice होता था. जब women used to drive and they were challaned and they were given a ticket, that was also a justice, and it was according to the needs of the Saudi society. Now the Saudi society under Mohammed bin Salman, it is changing. So now there is also justice.
Now, if anyone stops a woman who is driving, okay, they will get penalized. You are understanding what where I'm coming from? Suppose, चलो एग्जांपल लेते हैं फ्यूडल इंडिया का. ओके, फ्यूडल इंडिया का आप लो. सपोज कहीं कहीं पर क्या होता है, कहीं कहीं पर क्या होता है, आपने देखा होगा पंचायत में कभी कभी ऐसा. ओके, यस, that is something we can discuss in GS2 as well. All right, Saudi India relation या Arab reset. Okay, there is something called Arab reset going on, great Arab reset. We can discuss this in GS2 as well. But anyways, अब feudal India देखो. Suppose you get to hear these news, okay, that a rape victim, rather than filing a complaint, an FIR, her parents took them to the panchayat, and the panchayat said कि इस लड़की की शादी करा दो. ओके, इस लड़की की शादी करा दो. ऑलराइट, इस लड़के से, ताकि बात अंदर ही रह जाए. ओके, समाज में रहनी चाहिए. ओके, XYZ के लड़के ने XYZ की लड़की के साथ जबरदस्ती की. ओके, तो XYZ लड़के को हम बोल रहे हैं कि तू XYZ की लड़की से तू शादी कर ले. ठीक है, इसके तूने उस लड़की की इज्जत के साथ छेड़छाड़ की है, so you just marry her. Okay, so this is also, okay, a justice according to that panchayat. It is justice, all right, according to the needs of the society, the needs of the rural society. Whereas agar urban mein, suppose unfortunately an urban girl, okay, becomes a victim of these things, so what she will do? Will she go to any panchayat? Suppose a girl from Delhi or girl from Mumbai, okay, unfortunately it happens that she becomes a victim. She will go to the police station, file an FIR. According to CRPC, the process will go on. Criminal Procedure Code. There is no panchayat in Delhi, Bangalore, okay, because urban society, the needs are different. The urban individuals' need are different than rural individuals. The Taliban society's needs, the people under Taliban's needs are different than the needs of the people under the Republic of Afghanistan. That's why the women got justice, okay, only in Republic of Afghanistan, whereas people thought by stoning that woman on mere allegation that she disrespected the Quran, it was justice, because the needs of the society were different. In Taliban it was ultra orthodoxy, whereas in this Republic of Afghanistan it was a progressive society, hence the needs were different. Are you understanding what I'm trying to say here? Any doubts that you might have? Shall I move forward? Because if any doubt is there, you can ask. Okay, we will discuss it again. Because it is very important that you understand it in the month of June and July, so that by the time you are writing answers in October, it flows naturally. Okay, you do not need to think twice. Okay, Plato concept of justice, here it is. Okay, so do not be shy, do not be hesitant to raise any kind of queries. Okay, now Plato states that the justice system, when in the hands of powerful rulers who practice anarchy, can become manipulative. ऐसे लोग, ऐसे लीडर्स जो एनार्की प्रैक्टिस करते हैं, ओके, these are 90% of Indian leaders. Okay, this is a personal opinion. Okay, as a person who is delivering this lecture, I am entitled to certain opinion because this is a humanities course. Okay, so
I'll say कि 90% of Indian people, Indian leaders, they thrive on anarchy. They actually thrive on chaos. जंतर मंतर पे हर बात के लिए प्रोटेस्ट करना क्या बात हुआ? दैट इज एनार्की और नॉट? ओके, इंडिया में G20 चल रहा है एंड यू आर सेइंग कि G20 वालों के सामने हम धरना देंगे, आग लगा देंगे, वी विल पुट एवरीथिंग टू फायर इन फ्रंट ऑफ द G20 डेलीगेट. इज इट नॉट एनार्की? क्या वो एनार्की नहीं है? आप अपने ग्रीवांसेस हैं, ओके, जब आपके घर में गेस्ट आते हैं, ओके, जब आपके घर में गेस्ट आते हैं तो आप क्या करते हो? अपना डोमेस्टिक फ्यूड डू यू ले बेयर इन फ्रंट ऑफ देम कि देखो देखो सर, आप देखो ये मेरी वाइफ ऐसे बोल रही है, ये मेरी मम्मी ऐसे बोल रही है, या आप उनको पानी देते हो, अच्छी अच्छी बातें करते हो एंड देन यू सेंड देम अवे और उसके बाद फिर लड़ना शुरू कर देते हो? यस और नो? तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 90% ऑफ इंडियन लीडर दे थ्राइव ऑन एनार्की एंड chaos. Indian society is inherently chaotic, and these people, they just fan this anarchy and chaos, okay, and manipulate the justice system. जस्टिस सिस्टम का मतलब आईपीसी नहीं होता है. जस्टिस सिस्टम का मतलब सिर्फ सीआरपीसी नहीं होता है. ओके, जस्टिस सिस्टम का मतलब सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का जस्टिसिएबल पार्ट नहीं होता है. दैट इज वन फेसेट ऑफ जस्टिस. ओके, जस्टिस में सपोज दिस इज जस्टिस, तो उसके अंदर में आईपीसी और सीआरपीसी आ गया. जस्टिस इज अ होल, ब्रॉडर कंसेप्ट. ओके, जस्टिस इज अ होल ब्रॉडर कंसेप्ट. तो यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखना है कि प्लेटो ने क्या बोला था, दैट जस्टिस सिस्टम जहां पर भी एक रूलर हु प्रैक्टिसेस एनार्की, ओके, उनके हाथ में आ जाए, okay, when it goes into the hands of powerful rulers who practice anarchy, it can become manipulative. All right, it can become manipulative. अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, I gave you example of Saudi Arabia, I gave you example of Taliban stoning that lady to death, I gave you example, okay. हाँ, एक और बहुत बढ़िया एग्जांपल यहाँ कमेंट्स में बताया है, वो निर्भया वाला जो इशू हुआ था, राइट? निर्भया इंसिडेंट में बहुत बढ़िया अभिषेक का एग्जांपल है दैट आवर सोसाइटी, द नीड्स ऑफ आवर सोसाइटी वाज रिस्ट्रिक्टेड. द नीड्स ऑफ आवर सोसाइटी वाज रिस्ट्रिक्टेड व्हेन द निर्भया इंसिडेंट हैपेंड. द नीड्स गॉट इनहैंस्ड, दैट नहीं, हमारी जो बहन बेटी हैं, आवर सिस्टर एंड आवर मदर्स and our girlfriend and our wives, when they go out, they should feel secure. The needs got enhanced. Hence, there were amendments. There was Nirbhaya Act. Okay, there was the Nirbhaya Act. So the needs got enhanced. Hence, the justice system got modified. Okay, before that, the needs were restricted. Okay, ठीक है. अगर outraging the modesty of women, आज के डेट में अगर आप किसी औरत से सही से बात नहीं करोगे, if you will not talk to a lady in a dignified manner, she has every right to go to the police station and say that this man has outraged my modesty. Outraging the modesty is a very Indian concept. Okay, it is a very Indian concept. आपको वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगा outraging the modesty का ये जो प्रोविजन है इंडिया में, दैट अ वुमेन, सपोज आप औरत को गाली दे रहे हो, ओके, अमेरिका में गाली दे सकते हो तो, बट देयर शी कैन गो इन अ नॉर्मल लॉ. अगर आप मर्द को गाली दे रहे हो, अमेरिका में क्या है, इफ यू आर अब्यूजिंग अ पर्सन, ठीक है, तो इट डजंट मैटर इफ शी इज अ फीमेल और ही इज अ मेल, ओके, दे कैन गो अंडर अ कॉमन लॉ. एक कॉमन लॉ में बात हो सकता है. बट आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन, outraging modesty of a woman is a very Indian concept because it was the need of the Indian society. American society को need नहीं लगी कि we need special provisions to protect our women. That's why they did not go for these specific laws. Okay, I think this is clear. नाउ प्लेटो का जो आर्ग्यूमेंट है, ओके, प्लेटो का जो आर्ग्यूमेंट है ये इज दैट इट इज बेसिकली द पार्शियलिटी that the system of justice incorporates, which makes it a powerful state system.
justice system according to Plato, it's a very powerful tool. It is a highly powerful tool. Okay, why? Because it can be basically manipulated. It has partiality. It has partiality built in it. Okay, it has partiality built in it. Yes, Sai, please. हेलो मुझे भाई, गुड मॉर्निंग। Good morning, bhai. तो मेरा एक क्वेश्चन था। सो मतलब अभी तक जितना उसमें हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जस्टिस हैज नो कनेक्शन विद मोरालिटी, इट इज जस्ट बेस्ड ऑन द सब्जेक्टिव नीड्स ऑफ द सोसाइटी एट दैट पॉइंट। According to Plato, yes. ओके। Okay, according ओके। to Plato, because now we see here we are reading about particular thinker. हम कुछ अखंड सत्य नहीं पढ़ रहे हैं. We are not reading, a definite truth. What we are reading is basically Plato's argument. Okay. अभी हम दूसरे thinkers के बारे में पढ़ेंगे, so we will get to know that what is the reasoning, because they did not agree with Plato. Okay, but keep this in mind that whatever you have said, it is true, but according to Plato. Okay. तो मतलब जो मैं मतलब कह रहा हूँ वो ऑब्जेक्टिवली इट्स नॉट नेसेसरी दैट इट वुड बी ट्रू, It would इट्स be जस्ट true. फॉर द सेक ऑफ द आर्गुमेंट। Yes, it's for the sake of the argument, and you will realize, okay, once you will get to know other thinkers, who actually opposed Plato. Okay, who said whatever. Okay, it is not inherently corrupt. Okay, the system is not inherently corrupt that Plato is saying. Okay. Okay, ये चीज आपको ध्यान रखना है. But for that you need to have, you need to wait for some classes. Once you will राइट, राइट। get to, ठीक है. थैंक यू भाई। No issues. हाँ, सो उनका कहना था कि पार्शियलिटी जो है, ओके, सिस्टम ऑफ जस्टिस में, इट मेक्स इट, दैट्स व्हाई इट इज अ पावरफुल सिस्टम. आप देखो, फॉर एग्जांपल अगर मैं देता हूँ रियल वर्ल्ड से एग्जांपल देता हूँ, तो आप, यू आर अ पियून, सपोज यू आर अ पियून, एंड देन देयर इज अ पर्सन हु इज एन एसपी ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट. आप पियून हैं, तो आप 5,000 रुपए घूस लेते हुए पकड़ा है. ओके, तुरंत you are caught, you are a peon, and you are caught taking a 5,000 rupee bribe. You come in the limelight, and you are suspended. And your boss, he comes on the news and he said, कड़ी सी कड़ी सजा देंगे जी इसको हम. Okay, tolerate नहीं करेंगे. Okay, you are dismissed from the service for taking 5,000 rupee bribe, and justice is served. Can we say justice is served if you are dismissed from service for taking a small bribe? Yes or no? Can you tell me? Can I say that justice is served if that person is dismissed? The answer is yes. Justice is served, right? अगर कोई भी है, doesn't matter who he is, पियून है और उसको करप्शन के चार्ज पे पकड़ा गया 5,000 रुपए ब्राइब लेते हुए, and he is dismissed from service, that yes, the answer is yes, justice system has worked. But यहाँ पर partiality देखो, there have been cases where SP of a district, DM of a district have been caught. हमने एग्जांपल लास्ट क्लास में दिया था. देयर इज दिस छत्तीसगढ़ कैडर आईएएस ऑफिसर, ही इज स्टिल सर्विंग. थप्पड़ मारते हुए पकड़ा गया था. ही वाज कॉट, थप्पड़ मारते हुए ड्यूरिंग कोविड. ही वाज कॉट टेकिंग 15,000 रुपी ब्राइब in 2015. You can go and check. But he was not dismissed from service, he was just merely transferred. Whereas अगर कोई पियून होता, तो he would have been dismissed from service. So this is the partiality that Plato is talking about. कि वो एसपी था, डीएम था, तो बच गया, बस ट्रांसफर हुआ, वो भी उसके बाद प्लम पोस्टिंग मिल गई. There have been cases, you will not believe this. Indian state is such a glorious state. You will not believe this, that as an SP, as a DM, people have been caught taking bribe and they have been transferred to a better position. डीएम को पकड़े गए, डीएम साहब पे केस चला, डीएम साहब को प्रमोट करके सेक्रेटेरिएट में कोई प्लम पोस्टिंग दे दी गई और उसके 1 साल के बाद बड़े डिस्ट्रिक्ट में डीएम बना दिया गया. देयर हैव बीन सो मेनी केसेस. आइसोलेटेड केस तो बता नहीं सकता, रोज होता है. दिस हैपेंस ब्लडी एवरी डे.
that a DM or SP, some kind of graft charges. All right, graft charges are there on an SP or a DM or any officer, and he is awarded rather than getting demoted or getting suspended or any inquiry. He is promoted to a better plum position. So this is the partiality that Plato is talking about, which makes justice system a powerful system. Okay, justice system. Yes, Sachin Vaze ka case, although Sachin Vaze is now again dismissed from service. Okay, again dismissed from service. अभी ये क्या नाम था उस बंदे का, Atiq Ahmed was shot dead. Okay, now let us not go into the details, was it right or wrong. Some of you will say कि नहीं, rule of law को violate हुआ था. All right, yes, वो हाँ, that is Wazik is right. Wazik वो उसमें क्या हुआ था, that the person, okay, I think this person actually ran over and he was in a inebriated state. दारू पी रखी थी उसने. He was drunk and he ran over it. Rather than getting demoted, he got a plum posting. Okay, in a good district. Now here is the thing, Atiq Ahmed. Okay, we are not justifying his killing. Okay, Atiq Ahmed. Okay, he was in this CMs. Okay, under this CM, he was, he was उस पे एक case चला. Okay, but in a different CM's tenure, he would have been a minister. Okay, he would have been a minister, and in a third CM's tenure, okay, वो फिर जेल में रहता, and in the fourth CM's tenure, कैसे possible है, he would again have been in power. How is it possible that Atiq Ahmed becomes innocent and guilty? Atiq Ahmed becomes innocent and guilty merely on changing of chief ministers. यहाँ पर तो कुछ ऑब्जेक्टिविटी है नहीं. ओके, कोई एक पर्टिकुलर पार्टी XYZ पार्टी आती है पावर में तो उस पे केस चलता है. उसके बाद ABC पार्टी आती है, नेक्स्ट इलेक्शन में ABC पार्टी आती है, तो अतीक अहमद इज एब्सॉल्व्ड of all charges. How is it possible? It is this arbitrariness of the justice system. Okay, this way in which it is serving, okay, the powerful, it is getting manipulated in such a manner. It is getting manipulated in such a manner that makes it a powerful system. It is this propensity, okay, justice system ka ye propensity, according to Plato, that it is open to manipulation, it is open to arbitrariness, that makes it a powerful system. Okay, नाउ प्लेटो का व्यू क्या है? हमने थ्योरी ऑफ जस्टिस पढ़ ली. ओके, वी रेड थ्योरी ऑफ जस्टिस. ओके, हमने थ्योरी ऑफ जस्टिस पढ़ ली. ठीक है, नाउ हम लोग देखते हैं लॉ पे क्या उसका व्यू है. एंड एक्चुअली लॉ आपका GS2 में, GS4 में, बोथ में इंपॉर्टेंट है. आप जाके देखो, देयर हैव बीन क्वेश्चंस ऑन व्हाट इज लॉ, हाउ डू यू सी लॉ. ओके, इज लॉ नेसेसरी in a society, should we abolish law, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं. You need to be very vigilant. Okay, हमें बहुत ही एग्जाम सेंट्रिक वे में बह नहीं जाना है. ओके, अच्छी अच्छी बातें पढ़ के कि यार प्लेटो पढ़ रहे हैं, एरिस्टोटल, वी आर रीडिंग सॉक्रेटिस, वी आर रीडिंग थॉमस हॉब्स. जब तक एग्जाम नहीं निकालोगे, इफ यू विल नॉट क्लियर क्रैक एग्जामिनेशन, सब बकवास है. इफ यू विल कोट प्लेटो एज अ सेलेक्टेड कैंडिडेट, तो अच्छा लगेगा लोगों को सुन के, अच्छा लगेगा, rather than some fourth or fifth or sixth prelims failed candidate. Okay, keep this in mind. तो बहुत ही ज्यादा in the next 1 year बहुत ही ज्यादा एक एग्जाम सेंट्रिक वे में प्रिपरेशन करनी है. ओके, we have to prepare in a very highly exam centric manner. Keep this in mind. Okay, now Plato's views of law. ओके, प्लेटो का क्या व्यू है? क्वेश्चन आता है लॉ पे, कोट प्लेटो. अगर लॉ सेंट्रल थीम है, स्टार्ट विथ अ प्लेटो कोट. ओके, स्टार्ट विथ अ प्लेटो कोट. तो प्लेटो ने क्या बोला था? लॉ इज अ गार्ड अगेंस्ट टिरेनी. दिस कैन बी अ वेरी गुड इंट्रोडक्शन. ओके, दिस कैन बी एन एक्सीलेंट इंट्रोडक्शन इन एसे एज वेल. एंड यू नीड टू बी, यू इसको पता है, रट नहीं सकते हो आप. दिस हैज टू फ्लो फ्रॉम योर पेन ऑर्गेनिकली. ठीक है,
तो जब बार बार देखोगे, एवरी डे यू आर सीइंग इट, तब जाके कहीं ऑर्गेनिकली फ्लो करेगा आपके पेन से। ओके, सो प्लेटो हैज डब्ड लॉ एज अ गार्ड अगेंस्ट टिरनी। तो ये पॉजिटिव थीम है, he has spoken positively in favor of law, and he says that law serve as an ally of the whole city. ally मतलब क्या है? ओके, हाँ, यू कैन पैराफ्रेज ऑल्सो। ally क्या है? ally मतलब फ्रेंड है ऑफ द होल सिटी। ठीक है, इसके पीछे का रीजन क्या है वो हम देखेंगे। अकॉर्डिंग टू हिम, लॉ शुड, ओके, लॉ शुड कंबाइन परसुएशन विथ कंपल्शन। ये क्या हम बोल सकते हैं? कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। मॉडर्न टर्म में कैरेट एंड स्टिक अप्रोच की बात कर रहा है। कैरेट एंड स्टिक अप्रोच क्या होता है पता है ना? वो एक डोंकी रहता है, ठीक है, और उस पे एक आदमी बैठा रहता है और वो डैंगल कर रहा होता है, ठीक है, एक स्टिक पे कैरेट, एंड ये डोंकी मूव कर रहा है, और डोंकी जहां मूव करना बंद किया, ये स्टिक यूज करके इसको मारता है। ओके, और डोंकी, बट द डोंकी कीप्स मूविंग, इसको लगता है कि कैरेट तक मैं पहुंच जाऊंगा। उसी तरीके से प्लेटो ने बोला है कि लॉ को, ओके, इनडायरेक्टली ये बोला है दैट लॉ को आप एक कैरेट एंड स्टिक अप्रोच के थ्रू आगे बढ़ाएं। कंबाइन परसुएशन विथ कंपल्शन, यहां पर मतलब क्या है? इसका मतलब है दैट मेक द पीपल अंडरस्टैंड, make the population understand that these laws are for your own good, that these laws are for your own good. Okay, but when the people do not understand that these laws are for your own good, have some punishment, that if you will, okay, मैंने आपको बताने की कोशिश की, I tried to tell you that this law is for your own good, but you did not understand, but you did not understand. Okay, you don't want to understand, here is a punishment. If you will not follow this law, 5-year jail, but then the person will follow. अगर वो प्यार से बात नहीं मानता है, the citizen does not understand the persuasion part, then he will understand the compulsion or the punishment part. That is what Plato is saying, that if an effective law has to combine persuasion with compulsion, भाई ये गोल्ड माइन है आंसर राइटिंग के लिए, गोल्ड माइन है, कहां कहां आप यूज नहीं कर सकते हो। द वर्ल्ड इज योर प्ले ग्राउंड व्हेन इट कम्स टू यूजिंग दीज कोड्स इन योर आंसर राइटिंग। इतना क्रिएटिव हो सकते हो आप, कहीं भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, सो जस्ट कीप दिस इन माइंड। ठीक है, सिर्फ पढ़ नहीं रहे, अगेन आई एम रिमाइंडिंग, सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहे, इसको एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं। ठीक है, कंपल्शन यहाँ पर पनिशमेंट है, ठीक है, विच माइट किक इन इफ परसुएशन फेल। जो जैसा अभी हमने बताया है कि समझ नहीं रहा है बंदा, इफ ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस लॉ, ओके, देन पनिश हिम। इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि आपको मर्डर नहीं करना चाहिए, आई टेल यू मर्डर क्यों नहीं करना चाहिए, बिकॉज एवरी लाइफ इज इंपॉर्टेंट। ओके, if you will murder, that will set a wrong precedent and that this will kick in anarchy। आप नहीं समझे फिर भी मर्डर किया, then there is punishment। ओके, मर्डर में कौन सा लगता है? मर्डर में कौन सा लगता है? आई थिंक 302 लगता है ना मर्डर में, और 306, राइट, 302, 306, 307 अटेम्प्टेड सुसाइड के लिए अगर आपने किया है, राइट, ये सब प्रोविजंस है। आई थिंक यार इतना ना आर्बिट्ररी हो गया प्रीलिम्स। हाँ, अबेटमेंट टू सुसाइड इतना ना आर्बिट्ररी हो गया। आई थिंक वी नीड टू स्टडी द सीआरपीसी एंड द आईपीसी आल्सो दिस टाइम, not the whole thing, not the judiciary level, judiciary exam level thing, but at least we need to get the summary right। okay, because we cannot leave prelims fail किया है ना, तो punishment तो लेना पड़ेगा। ओके, ये punishment तो लेना पड़ेगा कि prelims अगर हम फेल कर गए, तो ये punishment की इस बार कुछ चांस पे नहीं छोड़ सकते। ठीक है, just keep this in mind। so core principle of Plato remains that absolute power corrupts absolutely। ओके, जितना भी थ्योरी ऑफ जस्टिस पढ़ा, प्लेटो का व्यू पढ़ा हमने लॉ पे, ओके, कैरेट एंड स्टिक, कंबाइन कंपल्शन विथ परसुएशन, ओके, कंबाइन परसुएशन विथ कंपल्शन, ओके, और क्या है? एलाई ऑफ द सिटी, गार्ड अगेंस्ट टिरनी,
एलाई ऑफ द होल सिटी, ये सब चीजें पढ़ी, लेकिन लास्ट में जो कोर प्रिंसिपल है ओके प्लेटो का, कि अगर आप एब्सोल्यूट पावर दे देते हो, इफ यू गिव एब्सोल्यूट पावर, ओके एब्सोल्यूट पावर टू पीपल, इट विल करप्ट। इसके अब्राहम लिंकन का याद है? अब्राहम लिंकन का कोट बहुत फेमस कोट है, लिंकन का बहुत फेमस कोट है। व्हाट इज दैट? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज दैट फेमस कोट ऑफ अब्राहम लिंकन? एंड दैट कोट इज, आई विल टेल यू, कि इफ यू वांट टू टेस्ट a man's character, if you wish to test a man's character, give him power. Okay, man यहाँ पर obviously 21st century के context में both man and women, but it was said in 1860s जहाँ पर women were not in public life much, तो उसमें उन्होंने कहा था कि मैन जो है या सपोज वुमेन, उसका कैरेक्टर अगर आपको टेस्ट करना है तो उसको पावर दे दो। वाई? बिकॉज एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, and this is said by Plato, and this was something which was corroborated by Abraham Lincoln. Okay, he said कि कोई भी कर सकता है, okay, any person can be full of virtue, any person can be full of virtue in normal circumstances। जब आप जब लाइफ में तंगी रहती है ना, आप देखते हो जो आपके घर पे जोमेटो वाले भैया आते हैं, स्विगी वाले भैया आते हैं, जो जेप्टो वाले भैया आते हैं, ओके, द पर्सन हु कम्स टू डिलीवर थिंग्स एट योर हाउस, द पर्सन हु वॉशेस योर कार, ही इज वेरी हम्बल। हैव यू सीन दिस? हैव यू सीन दिस? ही इज वेरी हम्बल। ओके, व्हाई इज, व्हाट इज द रीजन? देयर माइट बी नेचर, ओके, नेचर हो सकता है कि उनका नेचर हो हम्बल होने का, आई एम नॉट डिस्प्यूटिंग इट, बट I'll tell you something, what I feel is that they are humble, out of the way humble, बिकॉज एक तलवार लटक रही है सर पे कि जॉब चली जाएगी, इफ आई एम नॉट हम्बल विद पीपल, ओके, बिकॉज दे आर पावरलेस इन दिस सिस्टम, दे आर पावरलेस। उनको पता है इफ आई विल नॉट बिहेव, ओके, मेरी जॉब चली जाएगी, कस्टमर कंप्लेन कर देगा, द कस्टमर विल कंप्लेन, आई लूज माई जॉब, आई एम पावरलेस। वहीं पर आप देखोगे सरकारी ऑफिस में, ओके, सरकारी ऑफिस में उनको पता है दैट आई हैव द पावर, नोबडी कैन डिसमिस मी, I have the power, nobody can dismiss me। You go and see, they are the most arrogant pigs on the face of this earth, okay, state government babus, they are the most arrogant people on the face of this earth, okay, why? Because they have power, they have absolute power कि मुझे कोई नहीं निकाल सकता है, कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ है, even the president cannot, okay, I will go against the president in the court। मुझे पता है कि मैं कोर्ट में जाऊंगा तो मेरी बात सुन लेगी, मैं दो आंसू बहा दूंगा, ओके, मैं दो आंसू बहा दूंगा, झूठ बोल दूंगा तो कोर्ट मेरी बात मान लेगा। दैट्स एब्सोल्यूट पावर, एंड बिकॉज ऑफ दिस दे आर करप्टेड। आईएएस ऑफिसर क्यों इतना बात बोलते हैं, जीएस 4 में बड़ी बड़ी आंसर लिखते हैं, they go to interview and they say a lot of good things, but they end up getting caught। why? Because absolute power, and it has corrupted the persons। Still अब्राहम लिंकन की बात सच हुई, that if you wish to test a person's character, give him power, because absolute power corrupts absolutely। ठीक है, नाउ प्लेटो का हो गया, ओके, अब अर्ज यू की इसका समरी जरूर बनाना, जब भी समय मिले, मे बी आज कल परसों, ठीक है, आज कल परसों, मे बी अगले महीने, मे बी 2 महीने बाद, बट वेन एवर यू सेट उसकी समरी बना के आगे बढ़ना। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्लेटो का 10 पन्ने का नोट्स पढ़ रहे हो मेंस के एक दिन पहले। प्लेटो शुड बी, आई टेल यू समथिंग, अगर मेंस मेंस लिख रहे हो, सपोज 10 दिन बाद मेंस है, 10 days आफ्टर मेंस है आपका, तो यू शुड बी हैविंग प्लेटो का नोट 1 पन्ने के आधे में। इतना में प्लेटो ने जो जो बात कही है उसको समराइज करके आपने लिखा, तभी जाके आप बार बार रिवाइज करके उसको बार बार रिवाइज करके अपने आंसर्स में डाल सकते हो। ओके, ऑलवेज हैव योर आईज ऑन द प्राइज, ओके, ऑलवेज हैव द आईज ऑन द प्राइज। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक मेंस के एक दिन पहले प्लेटो पे 10 पन्ने के नोट्स पढ़ रहे हो। दैट शुड नॉट बी द दैट शुड नॉट बी द केस। ठीक है, ओके, एरिस्टोटल का हम डिस्कस करेंगे, स्टेट मैन और गवर्नमेंट पे क्या व्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, GS4
essay and GS2. You take out the questions, previous year questions को निकालो, okay, and you will realize कि कितने बार state पे, man पे, government पे questions आया है. Okay, in the past 1 decade बहुत बार आ चुका है. ठीक है. So his views on state, man and government. Okay, he's referred to as father of political science. Aristotle, he's referred to as the father of political science. And he has said what? He has said this: man is a political animal. Aristotle is of the opinion. Aristotle is of the opinion that political science is the most superior science, and it trumps all other sciences. Why? What is the reason? Why political science is the most superior science according to Aristotle? What is the reason? Because he says that man is a political animal. That's why. हम एक political being हैं, हम एक political animal हैं. Okay. Now, Aristotle is of the view that any sciences, be it biology, chemistry, physics, any science, उसका use क्या है? What is the use of any science? It is to better the life. Okay. उस साइंस का यूज करके, इंक्लूडिंग पॉलिटिकल साइंस, ओके, पॉलिटिकल साइंस का यूज करके अपने लाइफ को बेटर करना है. दैट इज द व्यू ऑफ एरिस्टोटल. ओके. एंड गोल ऑफ एनी साइंस इज टू बेटर द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग. दैट्स इट. एंड ही आल्सो सेज दैट among all sciences the political science is the most superior science. Why? Because man is a political animal. ठीक है. According to Aristotle, state is a necessary condition of a good life. He sees state as a necessary condition. मतलब state के बिना आप एक good life enjoy नहीं कर सकते हो. What is the reason? अब यहाँ पर यूपीएससी पूछ सकता है, महात्मा गांधी ने क्या बोला था? याद है 2020 का प्रीलिम्स, कार्ल मार्क्स एंड महात्मा गांधी ने एक चीज पे बात की थी. कार्ल मार्क्स और महात्मा गांधी का कॉमन क्या था? स्टेटलेस सोसाइटी. ओके. बोथ वांटेड अ स्टेटलेस सोसाइटी. स्टेट नहीं होना चाहिए. ईच विलेज, ईच पर्सन शुड बी सेल्फ सफिशिएंट, कि उसको स्टेट की जरूरत ना पड़े. whereas Aristotle says, he goes against what Mahatma Gandhi and Karl Marx believes. He absolutely goes against them and said that state is a necessary condition, my friend, for a good life. बिना state के good life हो ही नहीं सकती है. अब उसके पीछे का रीजन क्या है हम देखते हैं. ओके, व्हाट इज द रीजन behind this? तो Mahatma Gandhi wanted India not to be a state society. He wanted India to be a stateless society with millions of independent constituents, millions of independent self-sufficient constituents. Okay, जो चरखा क्यों चलाते थे? वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन में अगर आप देखोगे तो वोकेशनल एजुकेशन पे, ओके, वोकेशनल एजुकेशन पे बहुत ज्यादा फोर्स है. ओके, who was the chairman of Varda scheme of education? Little republics can be said. बिल्कुल सही, you are correct. जाकिर हुसैन. ओके, 1937 में it was formed. और वहां पर वोकेशनल एजुकेशन पे there was a lot of stress. Why? What was the reason? To become self-sufficient. Because ultimately Gandhi ji wanted a stateless society, whereas Aristotle did not agree with Gandhi. Okay, Aristotle in his views did not agree with Gandhi, which is ironical because Aristotle, lived thousands of years before Gandhi. फिर भी हम दोनों की बातों को कंपेयर कर रहे हैं आज 2023 में बैठ के. He opined that state is natural and there is no difference between state और society. वो बोला कि अगर सोसाइटी होगी तो स्टेट भी होगा. एरिस्टोटल का ये कहना था कि जब सोसाइटी होगी तो स्टेट भी होगा. ओके. ही सेज दैट मैन कैन नॉट सर्वाइव इन आइसोलेशन. उसके वजह से वो हाउस होल्ड बनाता है, एक लेडी और एक मेल. ठीक है. दे कम टुगेदर बिकॉज दे कैन नॉट tolerate isolation, because man is a social animal. Okay, man is a
सोशल एनिमल, ठीक है। इधर अ बीस्ट और गॉड, ठीक है, ये बहुत अच्छा लाइन है एरिस्टोटल का। ही हु डज नॉट लिव इन अ स्टेट और हु डज नॉट नीड अ स्टेट इज आइदर अ बीस्ट और अ गॉड, ठीक है। सो मैन कैन नॉट, ये अरिस्टोटल का कहना था, मैन कैन नॉट सर्वाइव इन आइसोलेशन, तो वो हाउस होल्ड बनाता है, वो शादी करता है। ओके, प्राइमरली क्या कहना है कि शादी करने के पीछे का रीजन क्या है, दैट ही कैन नॉट सर्वाइव इन आइसोलेशन, अरिस्टोटल का कहना है। ओके, इसके पीछे जेनेटिक रीजंस भी हो सकते हैं, दैट देयर इज अ एनिमल अर्ज। why people marry, and why people marry because procreation. Aaj, in this modern world, you can say there is a lot of theories going around, even feminist theory, which says that marriage is inherently oppressive, या काफी सारे ऐसे लोगों का ये कहना है that marriage अब 21st century में it is for companionship rather than procreation. But but here is the thing, that marriage, okay, marriage is based on the on the pillar, जो सबसे important pillar है, that is of procreation. Procreation का है that each person, we are an animal and we have this urge to procreate, to pass on our genetic material. Okay, there is a genetic memory which asks us, okay, that okay, I have given you life, now you need to transfer it somewhere. Okay, तो वहां से जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है, जब एंथ्रोपोलॉजी की क्लास लगेगी तो उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, मैरिज में वेस्टरमार्क का कंसेप्ट है, मैरिज में कि सैवेजरी से, बार्बरिज्म से सिविलाइजेशन हम कैसे बने, दैट वाज बिकॉज ऑफ मैरिज। ये तक कहा गया है, ओके, ये तक कहा गया है कि मैरिज के वजह से हम सैवेज से सिविलाइज बने। दैट इज अनदर थिंग, उसके उतना डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पर देखो, ये मैंने एक आपको अल्टरनेट चीज दे दी कि दैट देयर इज एन अर्ज टू प्रोक्रिएट, अर्ज टू पास ऑन जेनेटिक मटेरियल। बट यहाँ देखो, मैन कैन नॉट सर्वाइव इन आइसोलेशन। एरिस्टोटल ने क्या बोला था कि एंड दस फॉर्म्स अ हाउसहोल्ड, व्हेन हाउसहोल्ड एक्सपैंड्स, जब एक हाउसहोल्ड, दो हाउसहोल्ड, तीन हाउसहोल्ड, ठीक है, मल्टीपल पीपल साथ आने लगे, ठीक है, मान लो 10 जोड़ा है, देयर आर 10 men एंड 10 women, दे मैरी ईच अदर, ठीक है, तो कितना, 5 कपल्स हो गया, वी गेट 5 कपल्स, तो हाउसहोल्ड्स, 5 हाउसहोल्ड्स आया, नाउ दे फॉर्म अ विलेज। व्हेन हाउसहोल्ड्स कम टुगेदर दे फॉर्म अ विलेज, ठीक है, वो आके विलेज फॉर्म कर दिया, इट एक्सपैंड, हाउसहोल्ड गॉट एक्सपैंड्स। 10 कपल्स की 5 कपल्स है, 10 लोग हैं, अच्छा, ओह सॉरी माय बैड, शिट, सी सैट रिप, नेक्स्ट अटेम्प्ट सी सैट। ओके, 10 men है एंड 10 women है, राइट, so they will come together and form 10 couples, right, 20 people are there तो 10 couples है। अगर 10 people in together होता तो 5 couples होता। ओके, माय बैड, ठीक है। ओके, now here it has expanded, okay, 10 couples, okay, 10 couples come together, it means household has expanded, it will give rise to villages, ठीक है। now villages, when many such villages will form, सपोज एक विलेज, दो विलेज, तीन विलेज, चार विलेज, पांच विलेज, नाउ दीज ऑल विलेजेस विल कम टुगेदर, तो दे विल फॉर्म अ स्टेट। इंडस वाली सिविलाइजेशन में भी वही हुआ, सिटी स्टेट्स। हमें अभी क्या पता है इंडस वाली सिविलाइजेशन में क्या है, सिटी स्टेट्स। इवन आवर एंसेस्टर्स, दे कुड नॉट लिव अलोन, दे कुड नॉट लिव इन आइसोलेशन, इवन व्हेन दे वर एप्स। हमारे जो एप्स एंसेस्टर थे, दे आल्सो यूज्ड टू लिव इन कम्युनिटीज, ये भी हमने पढ़ा है। यस, एरिस्टोटल उसी चीज को ले रहा है एंड ही इज सेइंग, ओके, दैट स्टेट इज नेसेसरी बिकॉज men कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन। यहां पर क्या हो रहा है, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली, यहां पर इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी हो रही है।
एक हाउस होल्ड है, सपोज देर इज वन हाउस होल्ड, एक मैन है एक वुमेन है, उनके 2 बच्चे हैं, दैट इज अ वेरी बेसिक यूनिट। उसको गवर्न करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, यू डू नॉट नीड टू गवर्न। इफ देर आर 2 हाउस होल्ड यू डू नॉट नीड, इट इज ऑल्सो अ बेसिक यूनिट। बट 4, 5, 6, 8, 9, 10, 10,000 हाउस होल्ड है, but you will need a complex system, and that complex system is your state. जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा, ओके, एज नंबर ऑफ हाउस होल्ड इंक्रीज, एज नंबर ऑफ विलेजेस इंक्रीज, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। और उस कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल करने के लिए स्टेट की जरूरत है। स्टेट फिर क्या करेगा? स्टेट विल फॉर्म सम लॉज, ओके, स्टेट इज गोइंग टू फॉर्म सम लॉज कि भाई आप अपने नेबर को नहीं मार सकते। मैन, ये स्टेट ही के वजह से रिलीजन आया, ओके। जब स्टेट फॉर्म हुआ उसके वजह से रिलीजन आया। बाइबल में क्या कहा गया है? लव दाई नेबर, सुना है? लव दाई नेबर, ये वाला सुना है? लव दाई नेबर। तो ये क्यों कहा गया है? व्हाट इज द रीजन कि एक होली बुक में, एक होली बुक में स्पेसिफिकली कहना पड़ा लव दाई नेबर? बिकॉज man inherently want all the resources for himself. ये भी सत्य है। देखो, he cannot live in isolation, man cannot live in isolation, but at the same time he also wants all the resources for himself। ठीक है, अगर आप अपने नेबर को देखोगे, ठीक है, कि गाड़ी में चढ़ते हुए, suppose he's riding in a Porsche, okay, he's riding in a BMW, he's riding in an Audi, और आपके पास मारुति है, ठीक है, मारुति ऑल्टो चला रहे हो, तो आप क्या, आपका जो प्राइमल अर्ज है एज अ मैन, प्राइमल अर्ज ये होगा कि उस बंदे को मार के उसका ऑडी ले लो, उस बंदे को पीट पीट के उसका बीएमडब्ल्यू ले लो। ये प्राइमल अर्ज है। लेकिन आप क्या बोलते हो? यार अच्छी अच्छी गाड़ी है सर आपकी, ठीक है, बहुत अच्छी गाड़ी है, मे बी आई कैन ऑल्सो बाय इन द फ्यूचर। वाई? बिकॉज आप जानते हो कि उसको मार मार के अगर आप उसका गाड़ी ले लोगे, देन यू विल बी लायबल टू फेस लॉज। अभी हमने पहले पढ़ा था ना प्लेटो का, एलाई ऑफ द स्टेट। लॉ क्या है? एलाई ऑफ द स्टेट। तो यहां पर ये भी चीज है दैट मैन कैन नॉट सर्वाइव इन आइसोलेशन, डज यू नो हैज फॉर्म अ हाउस होल्ड। जब मल्टीपल हाउस होल्ड आए, इट लेड टू द राइज ऑफ विलेजेस, इट लेड टू द राइज ऑफ विलेजेस, मल्टीपल विलेजेस साथ आए, ओके। तो क्या हुआ? इंक्रीज्ड कॉम्प्लेक्सिटी, पीपल बिकेम टू कॉम्प्लेक्स, पीपल बिकेम टू कॉम्प्लेक्स टू हैंडल। That's why states आया, and when state came, it enforced some rules, it enforced some rules कि भाई इसको फॉलो करना है, ताकि इस कॉम्प्लेक्सिटी के वजह से एनार्की ना फैले, and each person can develop himself or herself fully। कुछ समझ आया? प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, डेवलप हिमसेल्फ और हरसेल्फ फुल्ली, दैट वाज एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी। तो क्या हम कह सकते हैं कि स्टेट के वजह से, विच इन्फोर्सेस द लॉ, विच इन्फोर्सेस द कोड्स, लिबर्टी एस्टैब्लिश हो रहा है? कैन वी से दैट? कैन वी से दैट कि लिबर्टी एस्टैब्लिश हो रहा है बिकॉज ऑफ स्टेट्स इनडायरेक्टली? यस और नो? इंक्रीज I think कॉम्प्लेक्स, yes. यस। तो इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल करने के लिए यू नीड अ स्टेट। जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा, जैसे इंडिया में 1.6 बिलियन पीपल, you need a very elaborate state, you need a very elaborate state, you need 180 IS officers। you are IS बनोगे तो पार्ट ऑफ द स्टेट बनोगे। ब्यूरोक्रेट क्या है? इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द स्टेट, bureaucracy is an extension of the state। yes, judiciary, more judges are getting hired। why? because population बढ़ रहा है। मोर आईएएस आर गेटिंग, इस साल 1100 आईएएस क्यों, 1100 ऑफिसर्स क्यों चाहिए? बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ओके, पॉपुलेशन इज गेटिंग इंक्रीज्ड।
ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस 5 6 आईएफएस ऑफिसर्स, फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स चाहिए होते थे। आज के डेट में 38 से 40 फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स चाहिए। व्हाट इज द रीजन? वी आर एक्सपैंडिंग। हम एक्सपैंड क्यों कर रहे हैं भाई? 5 से 6 आईएफएस ऑफिसर्स, बिकॉज एट दैट टाइम इंडियाज पॉपुलेशन was merely 35-40 crores। तो उसके लिए 5 से 6 आईएफएस ऑफिसर्स ओके वेयर इनफ। आज के डेट में आर पॉपुलेशन इज 5 times, so we will need 5 times the IFS officers. So expansion of state is important because as population increases, complexity increases, okay। इसीलिए ठीक है, इसने बोला है कि स्टेट नेचुरल है, because as complexity will increase, okay, the state will expand, and state is something which is natural। ओके, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी तो प्रोपेंसिटी टू बिकम एनार्किकल विल आल्सो राइज, एनार्की भी बढ़ेगी। ओके, जस्ट कीप दिस इन माइंड। ओके, मैन कैन नॉट सर्वाइव इन आइसोलेशन वाला पार्ट हमने कर लिया। ओके, वी हैड डन दिस। नाउ एज एंड व्हेन अ स्टेट इज फॉर्म्ड एंड सोसाइटी इज ऑर्गेनाइज्ड, ह्यूमन बीइंग्स कैन मीट देयर नीड्स। एरिस्टोटल का ये कहना है कि एज एंड व्हेन एक स्टेट फॉर्म होगा एंड सोसाइटी इज ऑर्गेनाइज्ड, ह्यूमन बीइंग्स कैन मीट देयर नीड्स इन पीस। ठीक है, आप समझो, आप काम पे जा रहे हो। ओके, देयर इज नो स्टेट टू इन्फोर्स लॉज, देयर इज नो स्टेट टू इन्फोर्स लॉज। आप काम पे जा रहे हो, यू गेट रॉब्ड। जो पैसे कमाए थे वो सारे रॉब हो गए। कैन यू मीट योर नीड? कैन यू मीट योर नीड? आज के डेट में काम पे जा सकते हो ना, ट्रेन लेके, मेट्रो लेके। मेट्रो किसने बनाया? स्टेट ने। यस और नो? उस मेट्रो को यूज करके काम पे पहुंच रहे हो। ओके, आपको किसी ने रॉब नहीं किया, नोबडी किल्ड यू व्हाइल यू वर गोइंग टू वर्क। दैट इज थैंक्स टू द स्टेट, एंड बिकॉज ऑफ दिस यू कैन मीट योर नीड्स। पैसा कमा के आप चीजें खरीद सकते हो, खाना खरीद सकते हो, पानी खरीद सकते हो। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है। Now, according to Aristotle, state's existence is as natural and important as the presence of family or village. एरिस्टोटल के हिसाब से एक स्टेट का एग्जिस्टेंस इज एज नेचुरल, ओके, एंड एज इंपॉर्टेंट एज अ प्रेजेंस ऑफ फैमिली और विलेज। जितना इंपॉर्टेंट आपके मम्मी पापा भाई बहन है, उतना ही इंपॉर्टेंट नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। You're understanding what I'm trying to say? जितने इंपॉर्टेंट आपके पापा मम्मी है, उतने ही इंपॉर्टेंट नरेंद्र मोदी की सरकार है, उतनी ही इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है आपके लिए। ठीक है, ये एरिस्टोटल का कहना है, एंड दिस इज हाईली ट्रू। You need parents for emotional support, okay, you need parents, okay, for other kind of supports, financial support, but you also need the state, my friend। okay, आपके फादर जा रहे हैं काम पे, योर फादर इज गोइंग, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एंड ही इज फंडिंग योर यूपीएससी एडवेंचर्स। he is going to work, okay, and he is able to work because of the state, and in some cases, like in my case, हमारा रोजी रोटी is directly dependent। if your father is a private sector employee, if your father is a businessman, he is indirectly dependent on state support। जब तक स्टेट उनको सपोर्ट नहीं करेगा विथ लॉज, ओके, विथ फेयर टैक्सेस, तब तक उनका बिजनेस नहीं चलेगा, या प्राइवेट सेक्टर की कंपनी भाग जाएगी अगर टैक्सेस फेयर नहीं होंगे। तो इनडायरेक्टली स्टेट का सपोर्ट है, तभी आपके फादर कमा सकते हैं। लेकिन इन माय केस एंड इन केसेस वेयर पीपल, जैसे कुछ लोगों के फादर गवर्नमेंट सेक्टर में, कुछ लोगों के फादर आर्मी में, यस, तो उन वो तो डायरेक्टली उनका जो घर में चूल्हा जल रहा है, ही दे आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द स्टेट। तो क्या मैं कह सकता हूं कि मोदी जी की सरकार, the government of India is as important to you as your father and mother? Yes or no? Yes or no? Can I say that Aristotle का कहना था that presence of family or villages, okay, जो state है उसका existence is as natural and important as the presence of family or village। क्या ये statement true hold करता है? The answer is yes, it holds very much true। okay, it holds absolutely true। जितने इंपॉर्टेंट आपके फ्रेंड्स हैं, ओके, फ्रेंड्स है, उतने ही इंपॉर्टेंट मोदी जी की सरकार है।
Now man is a political animal. You can use this quote in introduction of various questions, and it is up to your creativity. Okay, now according to Aristotle, इसको जरा हम define करते हैं. There is no difference between an animal or a human being other than the fact that human being has a desire and a sense of living good life. Okay, हमारे अंदर भी ह्यूमंस हम कहते हैं अपने आप को. ठीक है, हाउ डू वी डिफरेंशिएट? एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग, हाउ डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन एनिमल और ह्यूमन बीइंग? दैट वी हैव अ डिजायर एंड अ सेंस ऑफ लिविंग गुड लाइफ. आई विल गिव यू एन एग्जांपल, वेरी फनी एग्जांपल. मैंने अपने डॉग को, आई हैव अ डॉग. ओके, आई हैव अ डॉग. मैंने अपने डॉग को कल वो खिलाया, चिकन. ओके, इट्स 360 रुपीज किलो. बोनलेस चिकन इज 360 रुपीज किलो. तो मैंने मंगाया 360 रुपीज का. ठीक है, और उस चिकन को बॉईल किया और चिकन को बहुत हाथों से खिलाया. ओके, मैं फिर चला गया रूम से. देन आई मेरा डॉग कहीं मिल नहीं रहा था बहुत देर तक. तो मैं खोजने लगा मेरा डॉग कहाँ गया. तो जो मेरा डॉग था वो डस्टबिन में अपना कुछ ढूंढ रहा था. ठीक है, ही वॉज लुकिंग फॉर दो चिकन चंक्स जो डस्टबिन में फेंका गया था. मैंने उसको हाथ से खिलाया, मैंने महंगा चिकन खिलाया. बट स्टिल, सिंस ही वॉज अ डॉग, सिंस शी वॉज अ डॉग, वो जाके क्या किया? ओके, उसको गुड लाइफ का कोई वो नहीं है. अपने जो बेसिक इंस्टिंक्ट है कि अपने डस्टबिन में मुंह मारना है, दैट किक्ड इन. The dog does not have, okay, the dog does not have a desire to live good life, और सेंस नहीं है गुड लाइफ का. वो डॉग है, डॉग ही रहेगा. वेयर एज ह्यूमन बीइंग, वी हैव अ सेंस ऑफ लिविंग गुड लाइफ. हम डस्टबिन से नहीं खाना उठाएंगे. ओके, डस्टबिन से हम खाना नहीं उठाएंगे. ऑलराइट, अगर हमारा नीड्स फुलफिल्ड है तो हम स्टूप नहीं करेंगे इस लेवल तक. दैट्स व्हाई एरिस्टोटल सेड कि हमारे और एनिमल में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों को चिकन चाहिए. मुझे भी चिकन अच्छा लगेगा, मेरे डॉग को भी चिकन अच्छा लगेगा. बट सिंस आई हैव अ सेंस ऑफ लिविंग गुड लाइफ, तो मैं डस्टबिन में मुंह नहीं मारूंगा. ओके, मैं डस्टबिन में मुंह नहीं मारूंगा. वेर एज मेरा डॉग, उसको सेंस ऑफ लिविंग गुड लाइफ नहीं है, तो वो डस्टबिन में भी मुंह मार के जो एक दो चिकन के टुकड़े नीचे गिर गए थे वो खा लेगा. यू आर अंडरस्टैंडिंग? दिस इज अ वेरी 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 फनी एंड यू माइट से absurd लॉजिक, बट इट इज एक्चुअली ट्रू. ओके, ठीक है, हमारे पे डिजायर है, और डिजायर फुलफिल कैसे होती है? वो स्टेट से होती है, सोसाइटी और स्टेट. और स्टेट, एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग टू, स्टेट इज इक्वल टू सोसाइटी. जितने इंपॉर्टेंट आपके पापा मम्मी दोस्त हैं, उतने ही इंपॉर्टेंट नरेंद्र मोदी जी की सरकार है. जस्ट कीप दिस इन माइंड. ओके, यस. स्टेट एंड इट्स रिलेशन विथ मैन. स्टेट और उसका क्या रिलेशन है मैन के साथ? चलो दो दो पन्ने ज्यादा नहीं है. ठीक है, वी विल जस्ट रैप दिस अप. आई नो 1 से 1.5 घंटे के बाद जब आप पढ़ाई करते हो तो आप सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंचते हो, तो वो चीजें ऊपर ऊपर से जानी शुरू हो जाती है. नाउ आई अंडरस्टैंड, एज अ फेलो स्टूडेंट आई अंडरस्टैंड दिस फैक्ट. तो थोड़ा जल्दी करते हैं. तो स्टेट एंड इट्स रिलेशन विथ मैन. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड मैन अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल? एरिस्टोटल इज नोन फॉर हिज डिक्टम दैट स्टेट इज प्रायर टू मैन. इसका मतलब समझ रहे हो? दैट स्टेट, ठीक है, स्टेट इज प्रायर टू मैन. आप एज एन इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट नहीं हो. यू एज एन इंडिविजुअल, यू आर नॉट इंपॉर्टेंट माई फ्रेंड. द स्टेट इज मोर इंपॉर्टेंट. जब वॉर्स होते हैं, इंडिया पाकिस्तान में, इंडिया चाइना में वॉर होते हैं, तो देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु गेट किल्ड. ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू इवन मिलियंस गॉट किल्ड. ठीक है, 26 million people got killed. 26 million Soviet soldiers and citizens got killed. यूएसएसआर के सिटीजन्स गॉट किल्ड. तो आप कह सकते हो यार इतना ब्लड शेड क्यों? why kill, why did not Stalin, okay, why did not Stalin surrender to Hitler? Why did he killed, sent 26 million people, Soviet citizens, to get killed? The answer is here, my friend. Because स्टेट रहना चाहिए. हम ना रहे, भारत रहना चाहिए. हम ना रहें, ओके, भारत रहना चाहिए. रशियंस ना रहे, रशिया रहना चाहिए. अमेरिकन्स ना रहे, अमेरिका रहना चाहिए. द स्टेट शुड हैव अ प्रायोरिटी इन एग्जिस्टेंस ओवर अ मैन.
फॉर अ कलेक्टिव गुड। ओके, फॉर कलेक्टिव गुड, ठीक है, जब तक स्टेट रहेगा तब तक होप है। ओके, जब तक भारत देश रहेगा तब तक होप है दैट इंडियंस, अनलेस एंड अनटिल देयर इज एन इंडिया, अनलेस एंड अनटिल देयर इज एन इंडिया, देयर इज होप फॉर इंडियंस। लेकिन अगर इंडिया ही नहीं रहेगा तो इंडियंस का एग्जिस्टेंस वर्थलेस है। दैट्स व्हाई thousands of young boys, okay, thousands of young boys, fresh out of NDA, fresh out of IMA, fresh out of OTA, they went and climbed those Kargil heights, and you know, hundreds of young boys, 21, barely 20, they got killed. Hundreds of lieutenants, second lieutenants, hundred of lieutenants, okay, they straight out of, you know, their IMA and OTA, they climbed those Kargil heights and they got killed. क्या जरूरत थी? स्टेट रहना चाहिए मेरे भाई, ठीक है, द स्टेट शुड एग्जिस्ट, ऑलराइट, द स्टेट शुड एग्जिस्ट। अगर हम रहे ना रहे, द स्टेट शुड एग्जिस्ट। ओके, दिस इज नॉट सम डेली डोज ऑफ पैट्रियोटिज्म, डू नॉट कंफ्यूज दिस विद सम डेली डोज ऑफ पैट्रियोटिज्म। ये बहुत ही पॉलिटिकल एक साइंस का पार्ट है, दैट स्टेट शुड एग्जिस्ट इवन इफ द मैन इज नॉट एग्जिस्टिंग, ठीक है। Now, Aristotle believes it is the state that makes human beings capable of completing their needs and fulfilling objectives of life. पहले भी हमने डिस्कस किया था, this is actually a repeated point. Okay, अगर नहीं रहेगा, आपके पापा को सेफ्टी नहीं मिलेगी तो आपके पापा काम पे नहीं जा पाएंगे। अगर आपके पापा काम पे नहीं जा पाएंगे तो आप यूपीएससी का एडवेंचर नहीं कर सकते हैं, फिर आपको काम पे जाना होगा। यू आर अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आपकी देखो, फुलफिल, यू आर एबल टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, ओके, बिकॉज योर पेरेंट्स, आपके पापा मम्मी काम पे जा सकते हैं, ठीक है। तो इनडायरेक्टली यू आर रिक्वायर अ स्टेट टू इन्फोर्स रूल्स, टू इन्फोर्स लॉज, to give a conducive environment to businesses to thrive so that employment can be generated, ठीक है। Now, just like a leg or hand without a body, again you have to use this, please be very vigilant in your answer writing. Just like a leg or hand without a body is useless, an individual without a state is useless. जैसे एक leg or hand without a body is useless, in a similar fashion an individual without a state is useless, ठीक है। It is the state which makes individual whole. Okay, आपका जो पासपोर्ट है, आपका जो पासपोर्ट है उस पर लिखा हुआ है भारतीय गणराज्य, या इट इज रिटन रिपब्लिक ऑफ इंडिया, देन ओनली यू हैव सम वर्थ। इफ यू विल गो ट्राई, you know, going to UK, US without a passport, okay, ask Roma people. You understand who are Roma people? They have some Indian heritage, but they are basically gypsies. Roma people, they are basically gypsies and they are called stateless people. एक स्टेट से भगाए जाते हैं, रोमेनिया से भगाए गए, ओके, यूक्रेन से भगाए गए, फ्रांस से भगाए गए, ठीक है। दे आर बेसिकली स्टेटलेस रेफ्यूजीज। कहीं कहीं पर किसी कंट्री में गलती से, यू नो, उनको कुछ रेसिडेंसी मिल गया, बट मोर और लेस दे आर नॉट गिवन सिटीजनशिप, एंड एवरी इलेक्शन they are, you know, targets of xenophobia. Okay, every election they are targets of xenophobia. हमने अब याद करो प्लेटो वाला, जस्टिस सिस्टम मैनिपुलेट हो रहा है अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ सोसाइटी। लोग बोलेंगे कि जो भी चोरी चोरी हो रही है आपके शहर में, दिस इज बिकॉज ऑफ द रोमा पीपल, वी विल डिपोर्ट देम। the society will say, okay, these are my needs, okay, modify the justice system, kill all the romas, okay, put all the romas behind bars, ठीक है। तो उसी तरीके से रोमा पीपल हु आर स्टेटलेस, दे आर बेसिकली यूजलेस पीपल। रोमा पीपल, दे आर बेसिकली यूजलेस पीपल, ठीक है। व्हाई? बिकॉज दे डू नॉट हैव अ स्टेट। स्टेट enforces division of labor which ensures cooperation and harmony in society, ठीक है। डिविजन ऑफ लेबर बिगेट करता है स्टेट। द स्टेट enforces डिविजन ऑफ लेबर, कि तुम मेरे बाल काटोगे, ओके, मैं तुम्हारे लिए पानी भरूंगा, ठीक है। वो बंदा, दैट पर्सन, ओके, he will be the policeman, okay,
that person, he will be the farmer. That person, he will, he will do this, he will do that. Okay, now here is a controversial thing. Okay, यहाँ पर division of labor की बात की गई है, ensures cooperation and harmony. These are not my words. Okay, इसको थोड़ा सा sensitively समझना. These are not my words. Okay, this is something that I have come across, तो मैं आपसे share कर रहा हूँ. These are not my words, and I repeat, this is a very sensitive matter. Caste या वर्ना system. Now some people, okay, some people say कि जो India in the ancient times, it was the epicenter of the world. Some people are saying, okay, these are not my word, again I'm saying, and this is something which is very controversial. Now some people are saying that caste and varna system, okay, it was based on division of labor, and that is why India was so successful. But actually this theory has been disputed a lot. Okay, this is a very vague theory and it has been disputed a lot, but ये कहना चाह रही है, this is saying कि caste system के वजह से we became so successful in the early times because there was division of labor. caste system के वजह से division of labor था, ये कहा गया है. Okay? ये कहा गया है, ठीक है. आई एम सेइंग, बीच में मैं वर्ड्स भी डाल रहा हूँ बिकॉज यहाँ पर when you are discussing these topics you can be picked out of context. Okay, वीडियो एडिट करके you can be picked out of context and you can be cancelled. So that's why it is very important कि बार बार मैं ये बात बताऊं, these are not my words, this is actually a theory. Okay, कि caste system, because of the caste system in the early times, okay, it is said, okay, it is said that India became successful. And when this caste system became rigid and cancelled mobility, and when this caste system became rigid and cancelled mobility, and it became hereditary, the downfall of India started. The downfall of India started. ठीक है, ये है, and you can ponder upon it, you can think upon it कि क्या ये सही बात. Because of the caste system we were the first civilization, one of the first civilization which became, hyper division of labor was there, which led to some kind of specialization. ऐसा कहा गया है. Okay, specialization हुआ, उसके वजह से for a brief period, for a good amount of time, we were the we were the leader of the world, both in exports, both in culture, both in art. Okay, ठीक है. Now Aristotle believed that power and virtue cannot coexist. Power and virtue cannot coexist. अगर आप powerful है, you are not virtuous. Okay, yes Vivek, you can add something if you wish. हाँ मुझे भाई, मैं ये कह रहा था कि जो आपने कहा ना कि फंक्शनल स्पेशलाइजेशन वाला, तो जो प्लेटो's theory of justice is also concerned with this only. He believed in a functional specialization and division of labor, and that is his right conduct and right action, that is ethics. So his justice is not distributive or retributive, but more of ethics type, that is right action. So he divided society into three parts, and he divided individuals into three parts as well. That in some individual reason there are three qualities, that is reason, courage, and appetite. In some individual reason is dominant, so they become rulers. In some individual courage is dominant, they will become soldiers, and in some individual appetite is dominant, they will become these artisans. So that is why he uses this term that state is individual writ large. So because it is the division of labor or functional specialization and an individual, that is then projected on the society, and then it becomes the state. Yes, that is actually a very good argument, and I think इसको हम समझ के आगे लिख भी सकते हैं. ठीक है, see this is basically if you are a PSIR student, इसको तो आपको पढ़ना है, by default पढ़ना है. But the reason we are studying, why we non PSIR friends are studying, the reason is कि कोई PSIR के स्टूडेंट को undue advantage ना हो. अगर हमारे पास टाइम है तो we can dabble in some optional as well. Okay, we can dabble in some optionals as well, थोड़ा सा optional content पे, ताकि
जब कोई पीएसआईआर वाला जीएस4 का आंसर लिखे या पीएसआईआर वाला ऐसे लिखे, he or she should not have an undue advantage. Okay? तो ये सही है विवेक का जो पॉइंट है, यू कैन कोट दैट ऑल्सो, प्लेटो का जो एथिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, यू कैन कोट दैट ऑल्सो। ऑलराइट, यहाँ पर क्या कह रहा है एरिस्टोटल, क्या कह रहा है वो देख लेते। लेट अस सी व्हाट एरिस्टोटल इज सेइंग। He believed that power and virtue cannot coexist. If you are a virtuous person, if you are a virtuous person, you cannot be, okay, if you are a virtuous person, you cannot be powerful. And if you are powerful, okay, if you are powerful, you cannot be virtuous. Okay, both these traits cannot exist in a person, according to Aristotle. Now he says that without any adequate checks on a ruler's power, no form of government would be stable. यहां पर एक और चीज कह रहा है, कुछ पता चला यहाँ पर किसके सीड्स सो कर रहा है। ही इज सोइंग द सीड्स ऑफ समथिंग। बहुत, अरे इस साल क्वेश्चन आया है, नहीं आरटीआई नहीं, आरटीआई मतलब यस आरटीआई इन वन फॉर्म, लेकिन इस साल क्वेश्चन आया है प्रीलिम्स का। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है मेरे भाई? लिमिट करता है, यस और नो, लिमिटिंग फीचर, यस। तो इन अ वे, sitting 4000 years before or 3000 years before, Aristotle through his words that power and virtue cannot coexist, that's why we need adequate checks. What is the reason? Plato ने भी कुछ बात कही थी, that absolute power corrupts absolutely. यहां देख लो, सिंपल कंटेंट, प्लेटो एंड एरिस्टोटल के कंटेंट से, सिंपल कंटेंट से मल्टीपल क्वेश्चंस के आंसर निकल रहे हैं। यू हैव टू बी वेरी वेरी स्मार्ट, ओके, यू हैव टू बी वेरी क्रिएटिव कि कहां से मैं क्या निकालूं, ठीक है। यहां पर ही इज सोइंग द सीड्स ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी बिफोर इट इवन बिकेम फैशनेबल। ही सेज कि power and virtue cannot coexist, and even Plato said that absolute power corrupts absolutely. Hence there needs to be adequate checks on a ruler's power. No form of government would be stable without checks. Okay, अगर कोई absolute power हो जाता है, powerful हो जाता है कोई ruler, it would really देखो, it would lead to rebellion. How? Due to absence of control over the leader's power, the state becomes tyrannical. That is natural. This is assumed. This is assumed. Okay, due to absence of control over the leader's power, the state becomes tyrannical. अब मैं इसको थोड़ा GS2 के IR पार्ट से लिंक करना चाहूंगा। चाइना का एग्जांपल मैं देता हूं। चाइना में क्या है? What is the checks and balances? Can you tell me what were the checks and balances in China? कुछ है? 10-year रूल था। 10-year रूल था कि एक लीडर, जैसे जो सेक्रेटरी है सीसीपी का, ही विल रूल फॉर 10 ईयर। इसके पहले कौन था? आई थिंक जी के पहले हु जिनताओ था। यस, जी जिनपिंग के पहले हु जिनताओ था। यस, ही रूल्ड फॉर 10 ईयर्स। यस, उसको पता था कि मैं 10 साल के बाद अकाउंटेबल हूंगा। अभी मैं कुछ भी करूं एज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, मैं 10 साल के बाद, एंड इवन द सीसीपी, द कम्युनिस्ट जो सेंट्रल कमिटी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी है सीसीसीपी, वो मुझे इट कैन वोट मी आउट, ठीक है। तो वहां पर एक चेक्स एंड बैलेंसेस था। तो हु जिनताओ परस्यूड, ओके, हु जिनताओ परस्यूड प्रो पीपल मूव। उसने चाइना के इकोनॉमी को बेटर करने के लिए स्टेप्स उठाए। जी जिनपिंग ड्यूरिंग हिज अर्ली टाइम्स, उसको भी पता था कि मैं 2020 में आउट हो जाऊंगा 10 साल के बाद, एंड आई विल बी अकाउंटेबल। तो वो भी इन द अर्ली डेज ही स्टार्टेड परस्यूइंग प्रो पीपल मूव। बट अभी क्या हुआ? अभी क्या हुआ? दैट ही चेंज्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड बिकेम लीडर फॉर लाइफ। नाउ जी जिनपिंग बिकेम लीडर फॉर लाइफ। टेक्निकली उसने वो 10 साल वाला हटा दिया।
10 ईयर जो रूल था वो हटा दिया. What is happened? What has happened? There is absolute power. There is absence of control and absolute power in the hands of Xi Jinping. Yes or no? I can guarantee you, my friend. Okay, we are in 2023. Wait for some year. COVID के समय they became tyrannical. Xi Jinping, who had absolute power and an absence of control and an absence of checks and balances, he became tyrannical. People were committing suicide in China because of the lockdown. Okay, 3-4 year old kids, they were placed. Okay, they were placed in quarantine without their parents. ऐसा भी cases हुआ है. There have been starvation because क्वारंटीन कर दिया गया और उसके बाद खाना नहीं पहुंचा. Why? Because there was absence of control. इंडिया में on the other hand there have been checks and balances. सरकार ने, याद है वो इन द इनिशियल डेज सैनिटाइजर स्प्रे करने लगे थे माइग्रेंट लेबर के ऊपर तो उनकी आंखें जलने लगी थी. याद आया? इन द इनिशियल डेज ऑफ कोविड दे स्टार्टेड स्प्रेइंग सैनिटाइजर ऑन द माइग्रेंट ट्रेन्स. ओके, तो उनकी आंखें जलने लगी थी. देयर वाज आउटरेज because we have a free system. There was outrage और उसके वजह से because of that what happened was that there was correction that okay the district magistrates were ordered कि इस टाइप की हरकत नहीं होनी चाहिए. okay, there is a lot of outrage, इस टाइप की हरकत नहीं होनी चाहिए. ठीक है, एग्जाम्पल ले लो ना, CSAT, there was outrage. okay, CSAT, there was outrage. I am damn sure in 2024 there will be some kind of course correction from UPSC. There will be some kind of course correction. Whereas in Gaokao, there is an examination. I am not very sure if I am pronouncing it right. Gaokao करके एग्जामिनेशन होता है चाइना में. वहां पर अगर तुम प्रोटेस्ट करोगे ना कि टफ आया था गाओकाओ का पेपर, उल्टा लटका के ना टियानमेन स्क्वायर में मारेंगे. ठीक है, यहाँ पर तो तुम बच गए. सीसैट में दिल्ली हाई कोर्ट में दे रहे हो पिटीशन, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दे रहे हो, यूपीएससी आ रही है, यूपीएससी के लॉयर्स आ रहे हैं. ओके, सॉलिसिटर जनरल आ रहे हैं. ऑलराइट, और वो अपना बात रख रहे हैं. वहां पर अगर बोलोगे कि चाइना बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन बिकॉज वाई कि अच्छे से नहीं किया, ओके, अच्छे से उसने नहीं किया एग्जामिनेशन, मारेंगे तुमको. वाई? बिकॉज देयर इज एब्सेंस ऑफ कंट्रोल, देयर इज एन एब्सेंस ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस. ठीक है, अब देखना, नाउ वी आर एट दिस पॉइंट. नेचुरल प्रोग्रेशन क्या है? एब्सेंस ऑफ कंट्रोल हुआ, ओके, over the leader's power. Xi Jinping became all powerful, okay, and the state became tyrannical. And this will eventually lead to rebellion. ठीक है, they are suppressing the rebellion, but देखना within 2 to 3 years there will be major rebellion in China. Why? Because the state has become tyrannical due to absence of control. ठीक है. Now Aristotle has said to prevent rebellion and collapse. To prevent rebellion and collapse of state. अपने किताब एथिक्स में प्लेटो का रिपब्लिक याद रखना, एरिस्टोटल का एथिक्स याद रखना. He has recommended the concept of mixed constitution and golden mean. मध्यम मार्ग बेसिकली. बुद्धा का था ना मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ. वही चीज एरिस्टोटल ने अपने किताब एथिक्स में बोला है. That if you want to prevent rebellion and collapse of the state, and why to prevent the collapse of the state? What is the reason we need to prevent the collapse of the state? Because the state is as important as the family, is as important as the household, it is as important as the village. Yes, madhyamika school किसका था? madhyamika school, I don't remember. Actually, I don't remember. ठीक है. Now middle path बोला, ठीक है, मिडिल पास करने के लिए बोला. आई थिंक मध्यमिका योगा कारिका, यस, ठीक है, नागार्जुना, ओके. वर्च्यू लाइज बिटवीन टू एक्सट्रीम्स. जो आपका वर्च्यू है, ओके, इट लाइज बिटवीन टू एक्सट्रीम्स. यहां पर एक और चीज उसने कही थी वर्च्यू के बारे में. ठीक है, वर्च्यू एंड पावर कैन नॉट को एग्जिस्ट. दैट्स व्हाई यू नीड चेक्स एंड बैलेंसेस. इफ यू आर सेइंग दैट यू आर अ वर्चुअस लीडर, आप अगर एक वर्चुअस लीडर हैं
तो you cannot claim that you are a powerful leader, and if you are saying you are a powerful leader you lack virtue. ये एरिस्टोटल का कहना है, ठीक है। उसने इसलिए बोला कि सपोज यू विश टू स्ट्राइक अ बैलेंस, तो देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ गोल्डन मीन और मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन, और उसमें मिडिल पाथ की बात की गई है। ओके, एंड ही सेज कि जो वर्च्यू है इट लाइज बिटवीन टू एक्सट्रीम्स, एनीथिंग ऑन द एक्सट्रीम एंड बिकम्स अ वाइस एंड इट करप्ट्स यू। अगर आप एक्सट्रीम में जाते हो, इफ यू आर टू बेनेवोलेंट, एग्जांपल मैं देता हूँ, इफ यू आर टू बेनेवोलेंट एज अ स्टेट अगर आप स्टेट है, ठीक है, सरकार है आप, if you are too benevolent, so people will not take you seriously, they will start breaking the laws, they will not pay the taxes. And if you are too rigid, if you are too rigid and you are punishing on small mistake, then there will be rebellion. तो एरिस्टोटल ने प्रिस्क्रिप्शन दिया है, ओके, जैसे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन नहीं देता है, वैसे स्टेट्स के लिए एरिस्टोटल ने प्रिस्क्रिप्शन दिया है दैट हैव एन अ बैलेंस्ड अप्रोच, डोंट बी टू लीनियंट and don't be too tyrannical. Okay, now यहां पर क्या बोला है कि courage is a virtue, एक एग्जांपल दिया है, courage is a virtue that lies between the two extremes of timidity and intelligence, उनके बीच में लाई करता है, ठीक है। ये बेल कर्व अगर मैं बनाऊं, वो वाला मीम देखा है उस पे ट्विटर पे मीम देखा है कि यहाँ पर कोई लोअर आईक्यू 76 आईक्यू वाला पर्सन है, यहाँ 130 आईक्यू वाला पर्सन है, और यहाँ पर एक टॉय जैक है हु इज सीथिंग, ठीक है, 110 आईक्यू में। ऑलराइट, तो उसी तरीके से उसने बोला है कि यहाँ पर आप लाई करो, इफ यू विश टू स्ट्राइक अ बैलेंस, इफ यू विश, ओके, इफ यू विश कि स्टेट ज्यादा टिरानिकल ना हो और स्टेट ज्यादा लीनियंट ना हो, okay, then only the state will survive, otherwise the state will is not going to survive, ठीक है। और उसका एग्जांपल है कि if you want to be courageous, you can neither be too timid and you can neither be too intelligent. ज्यादा इंटेलिजेंट होगे, ज्यादा सोचोगे, इंटेलिजेंस का मतलब क्या, ज्यादा सोचोगे तो भी करेजियस नहीं हो सकते हो, और ज्यादा टिमिड होगे, जैसे सोल्जर होता है ना, अगर उसको बोले ठीक है कि आपको सामने टेररिस्ट है, 5 टेररिस्ट आ गए हैं एलओसी पार करके, ओके, अगर वो बहुत डरा हुआ है, इफ ही इज टू स्केयर्ड, ही कैन नॉट गो एंड किल द पर्सन। एट द सेम टाइम इफ ही इज थिंकिंग टू मच कि मैं कैसे जाऊं उसको किल करने, क्या मैं ऐसे जाऊं, क्या मैं ऊपर से, क्या मैं नीचे जाऊं, ठीक है, ज्यादा सोचेगा फिर भी नहीं कर सकता है, ज्यादा डरा हुआ होगा फिर भी जाके वो टेररिस्ट को चैलेंज नहीं कर सकता है। द सोल्जर हैज टू बी करेजियस, तो वो एक वर्च्यू है विच हैज टू बी बैलेंस्ड बिटवीन बीइंग स्केयर्ड एंड बीइंग ओवर थिंकिंग, ठीक है। हाँ, ये वाला जो पीयूष ने भेजा है वो वाला, ठीक है। Now, his concept of golden mean could be seen as a progenitor or a predecessor to modern constitutional democracy. So, golden mean is basically checks and balances. He says that allow the leader to be powerful, but also check him that he does not become too powerful. If he is not powerful, the people will start taking advantage of the state, and the state will collapse. But at the same time, if his power is unchecked, if his power gets unchecked, उसके बाद he will become tyrannical and then there will be rebellion. Rebellion का मतलब क्या होता है friends? Rebellion से क्या होता है? There will be collapse of state. Collapse of state, ठीक है? And once state collapses, आपकी जिंदगी नॉर्मल नहीं रह सकती है, okay? Your life will not be normal. Okay? So this is your, basically this is your Aristotle and Plato. अभी सोक्रेटिस करना है, हॉब्स करना है, बहुत बहुत चीजें हैं। दिस विल गो ऑन फॉर आई थिंक 2-3 days, ठीक है। कल ओके, आई जस्ट क्लोज दिस।